Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss some important disorders related to digestive system. So let's move to the whiteboard. So disorders of digestive system There are various disorders related to digestive system, but few of them which has been discussed in our book. First of all, appendicitis. तो ये वाली चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ डियर स्टूडेंट्स के आइटिस ITIS जिस भी ऑर्गन के साथ लगेगा इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन. सो अपेंडिसाइटिस प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था लार्ज इंटेस्टाइन को, और लार्ज इंटेस्टाइन में हमने बात की थी वहाँ पर के लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट्स फ्रॉम द सीकम, और सीकम के जो ब्लाइंड एंड होता है वहाँ पर मौजूद है अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. हियर इज सीकम and it contains a worm-like or finger-like projection. This is called as appendix. This is cecum and this is appendix. Yeah. So due to it is the inflammation, first of all its definition, it is the inflammation of appendix. So appendix, it's a part of large intestine. So it's an organ, while appendicitis, it's the inflammation of appendix. Clear? It is due to putrefaction or the entanglement of food within the lumen of appendix. And what are its symptoms? Its symptoms the major symptom includes severe pain in the right lower abdomen. तो डियर स्टूडेंट्स ये बहुत एक कॉमन सी एक डिजीज़ बन चुकी है ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो अगर हम एनाटॉमी की बात करें, सो यहाँ से स्टार्ट हो रही है सीकम, देन असेंडिंग कॉलन, देन ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, सिग्मॉइड कॉलन, रेक्टम. तो यहाँ पर इस जगह पर सीकम के साथ अटैच है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. तो ये कौन सी साइड बन रही है? राइट. और ये सारा एरिया हमारा कौन सा बनता है? एब्डोमेन. तो एब्डोमेन के कौन सी साइड पे मौजूद है? राइट और लोअर. तो वहाँ पर इसकी स्वेयर किस्म की पेन होती है, ये इसका खास सिम्टम है. एंड समटाइम्स इट रेडिएट्स टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड. समटाइम्स द पेन radiates towards left side of the abdomen. Clear? So that's an important symptom regarding the
appendicitis। और डियर स्टूडेंट्स, आम तौर पर हमारे यहाँ क्या किया जाता है कि appendicitis जब होता है तो अपेंडिक्स को रिमूव कर दिया जाता है, सर्जिकल इसको रिमूव कर दिया जाता है अगर उसको पेन किलर से या इस तरह से आराम ना आए। उसकी रीज़न द साइंस कंसिडर्स दैट दिस इज़ अ यूजलेस ऑर्गन। साइंस का ये मानना है कि जो अपेंडिक्स है ये एक यूजलेस है, नॉन फंक्शनल ऑर्गन है। ये हमारे आबाओ अजदाद में ये फंक्शनल हुआ करता था, और अब चूँकि हमारे आबाओ अजदाद जो होते ज़्यादा हर्ब्स के ऊपर डिपेंडेंट करते थे, लेकिन अब चूँकि हम थोड़ा सा एडवांस हो गए, वी आल्सो यूज्ड टू ईट द मीट, और हमारी उस तरह की खुराक नहीं रही, तो आहिस्ता आहिस्ता ये नॉन फंक्शनल होता गया। दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज द कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन। जो इर्तिका के अमल पे जो बिलीव करते हैं, लाइक द डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, according to them that is a non-functional organ. So dear students, can you consider how this organ could be non-functional? The reason only we say that it is non-functional is a lack of our knowledge. आपको पता है कि एक जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा कि आज से 50 साल 60 साल पहले की अगर बात करें या उससे चले बहुत ज़्यादा पीछे चला जाए तो 100 साल पहले की बात कर लेते हैं, सेंचुरी बिफोर, तो साइंस की बुक्स में ये पढ़ाया जाता था कि दुनिया जो है वो फ्लैट है। दुनिया का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से फ्लैट मीन जैसे जस्ट लाइक अ पेपर, जैसे मेरा हाथ है बिल्कुल फ्लैट है। तो लेकिन फिर एक साइंटिस्ट था, उसने ट्रेवल किया एक फ्रॉम वन साइड ऑफ द अर्थ टू द सेकेंड एंड द अदर एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो वहाँ पर जब वो एंड्स पे पहुँचा तो उसको पता चला कि द वर्ल्ड इज़ नॉट फ्लैट। तो साइडों से ये जब उसने देखा दोनों साइडों पर ट्रेवल करके, तो उसने कहा कि ये फ्लैट नहीं है, ये साइडों से फ्लैट नहीं है। फिर इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता जब इंसान ने थोड़ी तरक्की की इन्वेंशंस में, वो अब जहाज़ बन के उसने खला में स्पेस में जाना शुरू किया। जब स्पेस से अर्थ को व्यू किया गया, सो इट लुक लाइक स्फेरिकल, लेकिन वो इतनी ऊंचाई पे नहीं गए। लेकिन जब मज़ीद ऊंचाई पे गए, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे चले गए, तो वहाँ से जब उसको अर्थ को देखा तो पता चला कि ये स्फेरिकल भी नहीं है, मीन्स इट इज़ नॉट टोटली स्फेरिकल, बिल्कुल गोल नहीं है, रादर इट इज़ जियोस्फेरिकल। मतलब कि साइड्स जैसे अंडे की शक्ल की होती है, ठीक है, और स्पेशली द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, जो शुतुरमुर्ग का अंडा है उस तरह से। तो ये अब इसका मतलब है जो इससे 100 साल पहले या 60 साल पहले जिन्होंने तालीम हासिल की थी वो गलत है। फ़र्क सिर्फ ये है कि उनकी उस वक्त इंसान के पास वो एडवांस्ड नॉलेज नहीं था, वो टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे कि वो ये सारी चीज़ें मेजर कर सकते या वो उसको सही तरह से प्रूफ कर सकते। आज साइंस उसी अपनी ही बात को तरदीद करती है, उसको कॉन्ट्राडिक्ट करती है। सो हाउ इट इज़ पॉसिबल दैट द गॉड हैज़ क्रिएटेड द सुपर क्रिएशन, the human beings, and put something non-functional in it? So this is not possible. My belief is that it is due to the lack of knowledge of the science that we are saying the appendix is non-functional. इसका ज़रूर फंक्शन है, और आने वाले कुछ वक्तों में जब कोई बहुत ज़्यादा इससे भी एडवांसमेंट हो जाएगी तब ज़रूर पता चल जाएगा कि इसका कोई फंक्शन था कि नहीं था। जस्ट लाइक जैसे कि 100 साल पहले अर्थ को समझा जाता था कि वो फ्लैट है, और अब हम साइंस अपनी ही बात को गलत साबित करती है कि वो फ्लैट नहीं है, वो स्फेरिकल बल्कि जियोस्फेरिकल है। कितनी दफ़ा अपनी बातों की तरदीद की। सो हाउ दिस इज़ पॉसिबल दैट गॉड हैज़ क्रिएटेड द सुपर क्रिएशन एंड ही पुट समथिंग नॉन फंक्शनल इन दिस। क्लियर? नाउ तो मोस्ट ऑफ द टाइम द डॉक्टर्स इसी कॉन्सेप्ट को जहन में रखते हुए वो क्या करते हैं, चूँकि ये नॉन फंक्शनल है, सो लेट्स रिमूव इट। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, दे surgically remove it by the process called as appendectomy. So what is appendectomy? The surgical removal of appendix is called appendectomy. Ectomy means to cut.
सो ये तो वर्ड, ये लाइन हमारे बुक में इसका ट्रीटमेंट दिया गया कि उसको सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है, बट उसके लिए जो टर्म है वो नहीं दी गई, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दी, उसे एपेंडेक्टमी कहा जाता है। क्लियर? नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस डायरिया। So due to emotional disturbance or due to some drugs like nicotine or some other medicinal drugs, or due to infections, the motility of the colon is increased. Motility means the movement. जब उसकी motility increase हो जाती है colon की, it leads to less absorption of water. So when the water is not absorbed or less absorbed from the large intestine, it leads to, it produces loose motions, or which we called as watery motions, the passage of watery stools. Clear? And if it is unchecked, अगर इसको रोका ना जाए, if it remains unchecked, अगर बार बार मुसलसल मोशन किया जाए, it leads to severe dehydration and sometimes death of the patient. बच्चों में खास तौर पर जो पानी की कमी है वो बहुत ही जानलेवा साबित होती है। इवन के बड़ों के अंदर भी आपको मुसलसल अगर लूज मोशंस आ रहे हैं, दिन में 8-10 दफ़ा किए, लेकिन उसमें चूंकि वाटर रिमूव हो रहा है, एब्जॉर्ब तो हो नहीं रहा आपकी ब्लड में, तो इस ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट्स फिर क्या होता है कि इट लीड्स टू सर्टेन एलिमेंट्स एंड सर्टेन क्रिटिकल एंड सीरियस इलनेसेस एंड इवेंचुअली इट लीड्स टू डेथ। हार्ट के ऊपर लोड पड़ जाएगा क्योंकि ब्लड हैज़ बिकम थिक, उसके अंदर वाटर तो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा। तो ऐसी कंडीशन का फिर इलाज क्या किया है? अब फौरी तौर पर क्या किया जाता है कि ट्रीटमेंट के तौर पर के द इंट्रावेनस ड्रिप्स आर गिवन। ठीक है, तो वो वाटर को रिप्लेस किया जाता है इंट्रावेनस ड्रिप्स के ज़रिए ताकि पेशेंट बाहर। ऐसी कंडीशन में मेडिसिन देने से भी इसको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला पेशेंट को, बिकॉज कि उसके अंदर वाटर की डेफिशिएंसी हो चुकी है, डिहाइड्रेशन हो चुकी है। तो मेडिसिन का भी फ़ायदा तब होगा जब उसका वाटर लेवल कंप्लीट होगा, क्योंकि आपने पढ़ा था वाटर कि वाटर जो है इट एक्ट्स अ मीडियम फॉर मेटाबॉलिज्म। क्लियर? ये एंजाइम्स को वर्क करने के लिए चाहिए, बाकी हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ये सेल्स के अंदर जो प्रोसेसेस चल रहे हैं, दे नीड वाटर। सो दिस इज हाउ इट इज ट्रीटेड। और इसी तरह से इसके बिल्कुल ऑपोजिट एक कंडीशन है, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिपेशन। That is called as constipation. That is the opposite of diarrhea. It is due to excessive absorption of water from the large intestine leading to hardness of feces
which are unable to or which are difficult, which become difficult to pass. तो ये ऐसी कंडीशन है कि जिसमें लार्ज इंटेस्टाइन से हमारी जो बड़ी आंत है वहाँ से वाटर ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में फिर जो फीसिस है, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, वो हार्ड होना शुरू हो जाएगा। हार्ड हो जाएगा तो उसको बॉडी से रिमूव करना, उसको डेफिकेट करना, उसको एडजस्ट करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। सो अगर 3 दिन तक आपको पखाना ना आए या फिर आप फीसिस या स्टूल पास ना कर सकें, दिस इज टर्म्ड एज कॉन्स्टिपेशन। और फिर ये एक तो ये absorption of more absorption of water as well as it also becomes fatal if the motility of colon becomes slow। अगर लार्ज इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट है वो भी अगर स्लो हो जाए, एक नॉर्मल स्पीड के साथ जैसे होनी चाहिए थी वैसे ना हो, तो डियर स्टूडेंट्स फिर भी वाटर रीअब्सॉर्ब ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से ये कंडीशन पैदा हो सकती है। सो हाउ इट इज़ ट्रीटेड? इट इज़ ट्रीटेड by using laxatives. And what are laxatives? These are the medicines or the drugs, medicinal drugs used to relieve constipation. Clear? मेडिसिन्स के जरिए या फिर स्टूल सॉफ्टनर्स के जरिए, laxatives और स्टूल softeners, and also by using more water. So this is how it may be cured, and also by using dietary fiber. Clear? So this can be solved. So आप sometimes आपने देखा होगा छिलका पिया जाता है। छिलका बेसिकली दैट्स अ हस्क जो कि कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये बल्क बनाता है, ये फाइबर बनाता है, और इसी तरह से ये समटाइम्स ये डायरिया की कंडीशन को भी जो है उसको डील कर सकता है, उसको ट्रीट कर सकता है। नाउ देयर इज अनदर डिसऑर्डर which we are going to discuss. That is dyspepsia. Dyspepsia. So this one's dyspepsia, it is imperfect or incomplete digestion. That is called as dyspepsia, and it is a symptomatic of GIT disorder and not a disease. ये एक बीमारी नहीं है, जस्ट ये अलामत है, ये सिम्टम है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। इम्परफेक्ट और इनकम्प्लीट डाइजेशन हो रही है, यहाँ पर खाना सही से हजम नहीं हो पा रहा, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की किसी माल फंक्शन की वजह से ऐसा होता है। तो ये एक अलामत है, ना कि ये बीमारी। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम की किसी डिजीज की ये अलामत ज़रूर हो सकती है। क्लियर? So it is caused by,
ड्यू टू एक्सेसिव एसिडिटी इन स्टमक, मैदे में अगर तेजाबियत बहुत ज़्यादा हो जाए, HCl गैस्ट्रिक सेक्रेशन ज़्यादा रिलीज होना शुरू हो जाए, ऐसी कंडीशन में ऐसा होता है। या फिर आप जैसे कोल्ड जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, दे कंटेन फॉस्फोरिक एसिड इन दम, वो ज़्यादा अगर आप पीना शुरू कर दें तो उससे भी तेजाबियत पड़ सकती है। ठीक है, एक्सेसिव एसिडिटी इन द स्टमक एक ये इसकी कॉज है। नंबर 2, ड्यू टू माल फंक्शन of stomach and intestines, especially the small intestine, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। उनकी जो मॉल फंक्शन का मतलब है कि ऊपर नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहे, किसी भी की वजह से हो सकता है, वो इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, वो ड्रग की वजह से हो सकता है। एंड नंबर 3, ड्यू टू deficient quality and quantity of bile secretions, मतलब कि जो बाइल थी वो सेक्रेट हो रही थी, कहाँ पर, कहाँ से आ रही थी बाइल डियर स्टूडेंट्स? फ्रॉम द लिवर। लिवर सेक्रेट करता है उसको, गॉल ब्लैडर उसको स्टोर करता है, वहाँ से ज़रूरत पड़ने पर गॉल ब्लैडर थ्रू द सिस्टिक डक्ट, वहाँ से होते हुए कॉमन बाइल डक्ट, और कॉमन बाइल डक्ट से होते हुए वो फिर इट इज़ पोर्ड इनटू द ड्यूडेनम, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अगर वो उसकी क्वालिटी में कोई इशू हो, मतलब कि बाइल सॉल्ट्स और उनकी जो रेशियो होती है बाइल पिगमेंट्स की वो ठीक ना हो, तो ऐसी कंडीशन में भी डिस्पेप्सिया हो सकता है। या उसकी क्वांटिटी अप्रोप्रिएट ना हो, मतलब कि नॉर्मली जो जितना आप खाना खा रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली जितना बाइल रिलीज होना चाहिए था वो रिलीज नहीं हो पा रहा, सो दैट मे आल्सो लीड टू डिस्पेप्सिया। सो हाउ इट इज मैनिफेस्ट, हाउ इट मैनिफेस्ट, ये किस तरह से शो करेगी डिस्पेप्सिया? Here I am going to discuss the symptoms of dyspepsia. Number 1, abdominal discomfort, मतलब कि आपको इस रीजन में एक अनइजीनेस फील होना शुरू हो जाएगी, आपको सुकून या चैन वो नहीं आएगा, इस एरिया में एक अनकंफर्टेबल सेंसेशन आपको फील होगी। नंबर 2, फ्लैचुलेंस। फ्लैचुलेंस कहते हैं कि मैदे के अंदर गैस भर जाना, जो इंटेस्टाइन्स हैं और स्टमक, जो चूंकि डाइजेशन मुकम्मल नहीं हो रही, देयर इज माल फंक्शनिंग ऑफ स्टमक और इंटेस्टाइन, तो उसकी वजह से जब खाना मुकम्मल तौर पर हजम नहीं होता तो उसमें गैसेस ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं, उसकी वजह से एब्डोमेन क्या हो जाएगा, वो ब्लॉट होना शुरू हो जाएगा, मतलब कि वो उससे सख्त होना शुरू हो जाएगा, सो जिसकी वजह से एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट पैदा होना शुरू हो जाएगी, एंड दैट इज ड्यू टू द फ्लैचुलेंस, मतलब कि अफारा जिसे हम कह सकते हैं, गैस से पेट का भर जाना, ये इसकी सिम्टम हो सकती है। या फिर नाउजिया, नाउजिया कहा जाता है कि दिल का खराब होना, जैसे हम सादा अपनी देसी लैंग्वेज में कहते हैं हमारा दिल खराब हो रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे उल्टी आने वाली है, ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं नाउजिया, एंड समटाइम्स इट लीड्स टू वॉमिटिंग, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो कंटेंट्स होते हैं गैस्ट्रिक कंटेंट्स, दे आर एक्सपेल्ड थ्रू द माउथ, ठीक है, एंटी पेरिस्टाल्सिस के जरिए, जो आपको समझाया था इन द एसोफेगस, कि वो वहाँ से जो गैस्ट्रिक कंटेंट्स हैं या जो इंटेस्टाइनल कंटेंट्स हैं, दे आर रिमूव्ड और एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी, सो दैट इज कॉल्ड एज वोमिटिंग। सो दीज आर सम सिम्टम्स रिलेटेड टू डिस्पेप्सिया। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली कॉन्स्टिपेशन और डायरिया इन दोनों में फ़र्क आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे कुछ और डिसऑर्डर्स। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।